हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू केमती अछंती आपण माने समस्त आशा करूची समस्त भलो भाबे थिबे आ एग्जामिनेशंस पाइ डेडिकेटेडली प्रिपरेशंस करूथिबे सो घरे अछि तो गोटे वीडियो बनेबी बोली भाबली तो ऑन बोर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट ट्रस माने कोन एमिति ट्रसेस ओके सच टाइप ऑफ ट्रस which can be analyzed just by using equilibrium conditions तो मु आपन को बतै थिली देखंतु हमको बेसिकली कोन कोन फाइंड आउट करिया को रहउची सो वी नीड टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस ओके इडा गुटे फाइंड आउट करिया को रहिबो आ गुटे हमें कोन फाइंड आउट करिया ट्रस देखंतु एमती रहउची दैट डिफरेंट मेंबर्स इन ट्रस और नॉट बहुत गुडा को मेंबर अछि तो मेंबर भितरे फोर्सेस थिबो ओनली एंड ओनली एक्सियल फोर्सेस माने कंप्रेशन और टेंशन तो मेंबर भीतर जो फोर्सेस अछि एक्सियल फोर्सेस दोस एक्सियल फोर्सेस आई नीड टू फाइंड ओके मींस मेंबर फोर्सेस बुझी चलंतु ओके कांसेप्ट लर्निंग करंतु बुझंतु ये पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन टा ओके तो सपोर्ट रिएक्शन मते फाइंड आउट करियार अछि एंड मेंबर फोर्सेस मते फाइंड आउट करियार अछि एंड द ट्रस इज योर डिटरमिनेट मींस कि मु बस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करी only by using equilibrium equations आराम रे ये सपोर्ट रिएक्शंस गुडा को फाइंड आउट करि पारुची एंड मेंबर फोर्सेस गुडा को फाइंड आउट करि पारुची सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करिया पहले लेट्स सपोज 2D ट्रस अछि ओके यू हैव 2D ट्रस मु आपन को बतैथिली ये सब जिंस देन आई विल अप्लाई समेशन ऑफ f of y equal to 0 समेशन ऑफ f of x equal to 0 समेशन ऑफ movement about z axis about any particular point over the structure must be equal to 0 corresponding to rotational stability ये तीनटा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज हेइयो टू फाइंड द मेंबर फोर्सेस जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को हमें अप्लाई करियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू अप्लाई जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन केस ऑफ 2D ट्रस at each joint we have two equilibrium conditions that is summation of f of y equal to 0 and summation of f of x equal to 0 ये सब डेटा तो मु आपन को आप पूर्व रो भी देई सारी थली ओके आई हैव प्रोवाइडेड यू दिस ऑल डेटा नाउ लेट्स मूव ऑन द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ द डिटरमिनेट ट्रसेस तो देखंतु डिटरमिनेट ट्रस आ मीनिंग ये गेला कि जस्ट बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस जस्ट बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वी विल डू आवर कंप्लीट एनालिसिस वी कैन डू आवर कंप्लीट एनालिसिस इफ इट इज सो मींस जो भी मेथड गुडा को बतेबी those method can be also called as by another name called as equilibrium method तो आपन को क्वेश्चन दे दबो कि which one of the following is equilibrium method of analysis of truss अब सिलेबस रे ये डिटरमिनेट ट्रस रो एनालिसिस ही अछि ओके इन OSSCJE सिलेबस सो लेट्स मूव तो ना गुडा को कहूची देखो तो व्हाट आर द नेम्स ये सब लिखिया दरकार नै ओके बुझी चालंतु अब जति लिखिवार अछि तो मु जति लिखि चालुची लिखि चालिए देखो ये मेथड रो ना गुडा को लेखंतु देयर आर हाउ मेनी मेथड्स फर्स्ट मेथड ऑफ जॉइंट ठीक अछि दिस इज वन मेथड सेकंड मेथड जो हमें पढिबा मेथड ऑफ सेक्शन ओके ये दुईटा मेथड तो हमें नीचे पढ़ी भाई ओके वी विल गेट कंप्लीट आइडिया ऑफ दिस टू मेथड बिकॉज़ दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करिया पाई वी बेसिकली यूज दिस टू मेथड ओनली थर्ड इज ए ग्राफिकल मेथड इट इज ए ग्राफिकल मेथड जाय रे विलोट मोर्स डायग्राम आपको हमें विलोट मोर्स डायग्राम मेथड भी कहू विलोट मोहर्स डायग्राम मेथड तो क्वेश्चन रे ये जैसे ही पचारंती कि विलोट मोहर्स डायग्राम मेथड जो अछि इट इज अ ग्राफिकल मेथड गोटे तो इट इज अ मेथड टू एनालाइज डिटरमिनेट ट्रसेस मींस इट इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम मेथड ये जिंसोट आपन को क्वेश्चन रे पचारी फोर्थ मेथड जो एठी रहिला लिखि नियंतु फोर्थ मेथड इज बार चेन मेथड ये चारिटा मेथड
these are the equilibrium methods. आपको हमें equilibrium methods भी कहूँ. Equilibrium methods. Okay, these four methods are also called as equilibrium method. रूम रे टिके लाइटिंग रो प्रॉब्लम अछि. ओके, माने प्रॉपर स्टूडियो सेटअप करिनी जस्ट फॉर माय ओन रफ वर्क. मु एठी गोटे मोर पर्सनल रूम रे बोर्ड लगे को रखिछि, तो सेठी टिके आपन को इच्छा लागिला तो बते दउछि. बहुत शीघ्र मु डिजिटल बोर्ड सेटअप लगाया को जाउछि. ओके, नॉट इन रूम, इन माय स्टूडियो. हम पाखरे थिला ऑलरेडी, बट एठी ना एमपी रे अछि. सो दिस आर द मेथड. नोट करंतु. ओके, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, ग्राफिकल मेथड भितर विलोट मोहर्स डायग्राम मेथड, तापर बार चेन मेथड जाको आमे इक्विलिब्रियम मेथड भी कहउछु. तो आइरा आमे स्टार्ट करिया कोन मेथड ऑफ जॉइंट. ओके, so we will start लिखि नहीं जानते. we will start method of joint. देखो मेथड ऑफ जॉइंट मु आपन को कांसेप्ट बुझाउछ. व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट. हेडिंग दियंतु मेथड ऑफ जॉइंट. What is the concept of method of joint? सुनो, डिटरमिनेट ट्रस रो एनालिसिस करिया. माने जो भी ट्रस अछि तार ds मस्ट बी इक्वल टू 0. ये जिनसटा फाइंड आउट करियो. फर्स्ट ds केमती फाइंड आउट करियो एडा मु बुझै छी ट्रस वाला चैप्टर में जते बेले पढौथली. ds इक्वल टू 0 माने एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी मस्ट बी 0 प्लस इंटरनल आल्सो 0. मींस ओवरऑल ये दुईटा मिसी को 0 आसीयो कथा. dsi DSC plus DSI equal to 0. Let's suppose कि 2D truss और plain truss. Okay, 2D truss और plain truss ऊपर हमें analysis करना. Plain truss. Basically अपन रो जो question अपन को आसीओ ये 2D truss और plain truss रे ही आसीओ. Okay, 3D ऊपर जीवे तो बहुत complicated है जो बड़ा analysis है वो. तो objective रे से सब question दियंती नहीं. Just objective पचारते, theoretical questions गुड़ा को पचारते. तो बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ये वाला सेक्शंस रो आसी पारे. तो DSC प्लस DSI मस्ट बी इक्वल टू 0. ये फार्मूला टा कोन थिला देखंतु. एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस RE माइनस 3 प्लस देखंतु DSI केते M माइनस 2J माइनस 3. एमती हमें फाइंड आउट करिया. ये ओवरऑल माने ds टा जदी एटा 0 आइला देन द ट्रस इज योर डिटरमिनेट ट्रस. ओके, देन द ट्रस इज योर, देन इट इज डिटरमिनेट ट्रस. डिटरमिनेट ट्रस माने by using equilibrium equations we can find the external support reactions and मेंबर फोर्सेस. ओके, आ मीनिंग होची एटी. तो एबे हम केमती स्टार्ट करिया. तो सब तो फर्स्ट इडा हेला अपन मेथड ऑफ जॉइंट रे स्टेप नंबर 1. ये जिनस अपन चेक करी. हमको बेसिकली मेंबर फोर्सेस गुडा को कैलकुलेट करिया अछि. तो मु अपन को एग्जांपल दोछि बुझान. लेट्स सपोज दिस इज ए ट्रस वी हैव. उडे छोटो बेसिक ट्रस मु नै को चल. दिस इज ए ट्रस वी हैव. एटी हिंज सपोर्ट अछि, एटी रोलर सपोर्ट अछि, तीनटा जॉइंट अछि ए ट्रस रो, तीनटा मेंबर अछि. तो मु सबटु फर्स्ट आरो ds कैलकुलेट करी. एटी केते रिएक्शन, गोटे वर्टिकल रिएक्शन हिंज सपोर्ट, गोटे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. एटी केते रिएक्शन, एटी गोटे रोलर एंड गोटे ही रिएक्शन. तो आरो ds केते ही जीवो. ds विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्लस इंटरनल माने RE माइनस 3. RE केते एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस केते 1 2 3 3 माइनस 3. एटा तो 0 हे गेल ऑटोमेटिकली प्लस नंबर ऑफ मेंबर m केते अछि 1 2 3 तीनटा मेंबर माइनस 2j माइनस 3. जॉइंट केते अछि 1 2 3. वी हैव 3 नंबर ऑफ जॉइंट. 2j 3 into 2 6 minus 3 3
3 minus 3 एठी केते 3 minus 3 it is also 0 means ds equal to 0 for this particular truss. It is a determinate truss. It can be analyzed by using equilibrium conditions. Yes, okay. तो हम केमती एनालाइज करिया मेथड स्टेप 1 लिखेली ds कैलकुलेट करिया स्टेप 2 लिखौ छै स्टेप 2 रे हम कोन करिया देखा what we have to do in step 2. First find this external support reactions. Let's suppose this is your R1 vertical reaction, this is your R2 vertical reactions, this is your H1 horizontal reaction. और support ना दे दो नॉले support रो ना दे दियो. This is support A, this is support B. तो it is RA, it is RB, this is HA. Okay, हमें support रो ना दे करी एमसे reactions गुडा को शो कर दे. तो फर्स्ट सेकंड स्टेप रे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस गुडा को हम फाइंड आउट करिया. फाइंड एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस. फाइंड एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस. तो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस केमती फाइंड आउट करिया बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. बाय यूजिंग equilibrium equations. Equilibrium equations. ये equilibrium equations उड़ा को कुकुड़ा देखो तो for the overall truss, for the complete truss, for the overall truss we have to apply three equilibrium conditions. कौन? Summation of first equation, summation of vertical forces FB on this particular truss must be 0. Second, summation of horizontal forces FH on this particular truss must be 0. Third equation, summation of moment due to all loading and reaction about z axis about any particular support must be equal to 0 for vertical stability, for horizontal stability, for your rotational stability. ये तीनटा इक्वेशंस अप्लाई करी ये तीनटा अननोन सपोर्ट रिएक्शंस हम इजीली फाइंड आउट करि परिबा. HA is unknown, RA is unknown, RB is unknown. For example, मु आपन को लोडिंग देखे दउ छी मो राइट पेंटा क्वाड वाला के. लेट्स सपोज इडा गोटे जॉइंट, लेट्स सपोज दिस इज जॉइंट C. लेट्स सपोज ये जो एंगल गुडा का अछि दिस आर योर 45 डिग्री एंगल्स. दिस इज अगेन 45 डिग्री एंगल. लेट्स सपोज तो ये एंगल कितने हो automatically sum of angle of a triangle must be 180 degree. So ida 45 nearly, ida 45 nearly, then that must be your 90 degree angle. Okay, this must be 90 degree angle. Let's suppose मु ये joint ऊपर loading लगे देली P. ये बड़े बड़े horizontal load लगे देली कौन लगे दो आको P1 लगे देली ये बड़े एठी लगे देली P2. Let's suppose just for analysis बुझौ छी एटी P1 लगे देली horizontal load मु लगे देली P2. एबे देखो summation of vertical forces equal to 0. तो इक्वेशंस लिखिबा स्टार्ट करिवे. तो फर्स्ट इक्वेशंस summation of vertical forces equal to 0 जदि मु लिखिबी then I can write what I can write RA plus RB must be equal to P1. This is your equation 1. Equation 1. Summation of horizontal forces must be equal to 0. ठीक माने मु कोन लिखिबी लेट्स सपोज ये जो डायरेक्शन मु एज्यूम करी छी ना एमिति ये पोटे डायरेक्शंस का एज्यूम करी छी HA रो बट इन रियलिटी HA will not develop in this particular direction because loading हमें ये डायरेक्शन रे अप्लाई करू छु तो ये सपोर्ट रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन रे ही डेवलप करिवो. ताकू मु रिवर्स डायरेक्शन शो करि दउ छै. ओके, दिस इज योर H. तो बाय यूजिंग समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वेशन इक्वल टू 0 फॉर द कंप्लीट ट्रस ओवरऑल ट्रस मु एटा लिखि परिबी कोन लिखि परिबी कि HA इज इक्वल टू P2. तो HA रो वैल्यू हमें फाइंड आउट करि लेलो. दिस इज योर इक्वेशन 2. दुटा इक्वेशन अप्लाई करिलु HA रो वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट ही गेला. एबे थर्ड इक्वेशन अप्लाई करिबा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0. तो एठी जागा नै तो ऊपर वाला मु लेबोची मिटौची आपण माने समस्त लेखि नियंतु फर्स्ट नोट करंतु एति.
Note it down up to here. नोट करंतु एठी जगह अछि ना एठी लिख दो देखंतु थर्ड इक्वेशन समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 तो लेट्स सपोज एठी सपोर्ट देखंतु सपोर्ट ए बी मोमेंट को सॉरी सपोर्ट ए बी मोमेंट को रेजिस्ट करि परिबनी हिंदी सपोर्ट बी बी मोमेंट को रेजिस्ट करि परिबनी बिकॉज़ इट इज रोलर सपोर्ट ठीक अछि so what we can do let's suppose about support B mu moment equal to 0 apply कर दोछि ओके moment equal to 0 apply कर दोछि so देखंतु ये जो जॉइंट C अछि इडा देखंतु लेट्स सपोज ये एकदम सेंटर अछि ये स्पैन लेंथ आपन को देवा कथा क्वेश्चन में ये मेंबर और लेंथ का लेट्स सपोज द मेंबर लेंथ इज कंप्लीट लेंथ इज L तो ये सेंटर रू सपोर्ट बी रो लेंथ केते हिजु L/2 हे गेला L/2 हे गेला ठीक अछि तो एबे मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करिवा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z एक्सिस अबाउट सपोर्ट b मस्ट बी इक्वल टू 0 जदी लिखिवा देन व्हाट आई कैन राइट देखंतु मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करिवा टेक्निक आपन को जना सोम रे बतैथिली क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करि दियंतु अबाउट सपोर्ट b तो देखंतु RA into L ठीक अछि अच्छा ये हाइट भी किछि कंसीडर करंतु कंसीडर दिस पर्टिकुलर हाइट आल्सो ओके कंसीडर दिस पर्टिकुलर हाइट आल्सो बिकॉज़ वी हैव अनदर लोडिंग P2 ये जो हाइट अछि आको भी हमें L कंसीडर करिना दिस इज आल्सो L लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर हाइट इज आल्सो L ये स्पैन भी L हाइट भी L जस्ट बुझे आपे क्वेश्चन रे किछि अलग डेटा दिया हिथिबो बट आपन को एक्सप्लेन करिया पे मु ये जिंसो गुडा को पैरामीटर गुडा को डिसाइड करू छी तो देखंतु अबाउट सपोर्ट बी RA को टाइप मूवमेंट प्रोवाइड करू छी RA इज प्रोवाइडिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट विजुअलाइज करंतु RA into L इट इज रोटेटिंग लाइक दिस क्लॉकवाइज मूवमेंट तो RA into L ये P2 भी को टाइप मूवमेंट प्रोवाइड करू छी P2 into L क्लॉकवाइज तो मु लिखिबी कोन RA into L लेट्स सपोज क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव कंसीडर करिली तो प्लस RA into L प्लस P2 into L ठीक अछि एबे ये जो P1 लोड अछि ये केमती मूवमेंट प्रोवाइड करू छी P1 into L/2 एंटी क्लॉक को पॉजिटिव कंसीडर करिले एंटी क्लॉक को नेगेटिव कंसीडर करिवि माइनस P1 into L/2 आउ को लोडिंग और रिएक्शन जो मूवमेंट आसीबो कि पॉइंट बी रे नो कोन पे बोले RB पॉइंट बी रु पास करी जाउची RA जो अछि सॉरी HA RB लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट बी रु पास करी जाउची so these two reactions will not create any movement here RB किछि मूवमेंट दबो नै HA किछि मूवमेंट दबो नै clear so this equation is final this is equal to 0 so from this particular equation we can find what देखो RA into L ठीक अछि RA into L plus P2 into L equal to P1 into L/2 ठीक अछि तापर RA into L equal to P1 into L/2 जदि वैल्यूज गुडा कथिबो तो कैलकुलेट करि लेबे ना माइनस P2 into L ठीक अछि RA equal to P1 into L/2 minus P2 into L divided by L so RA जो सपोर्ट रिएक्शंस अछि इटा में फाइंड आउट करि नेलु by using the equation 3 so if we find RA support reactions तो by using the equation 1 देखंतु RA plus RB is equal to P1 so RA रो वैल्यू एटी पुट कर दवा तो RB रो वैल्यू फाइंड आउट हे जिवो so RB फाइंड आउट हे गेला so तीनटा जाको सपोर्ट रिएक्शंस जो भी अननोन थिला लेखंतु तीनटा जाको सपोर्ट रिएक्शन जो भी अननोन थिला हमें इजीली फाइंड आउट करि पारिलु जस्ट बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस just by applying the equilibrium conditions getting the point so this is the concept how you will apply the equilibrium conditions to find the external support reactions lekhantu complete karantu टिके वाटर पी दोछि
ओके ओके गाइस, सो एतकी जाए कंप्लीट ही गेला. ओके, तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 यू कैन आल्सो फाइंड आरबी वैल्यू. ठीक अछि, तो ये आरबी रो वैल्यू कोठी फाइंड आउट करियो. एठी मु लिखि दउछि, एतकी लिखि नै जानते. देखो ओके, आ ऊपर क्वेश्चंस करे भी संध्या रे जस्ट एबे. ओके, मु एक्सप्लेन कर दउछि मेथड टा. डायरेक्ट क्वेश्चन करिया आबे संध्या इवनिंग. So by using from equation 2, sorry, from equation 1, RB is equal to P1 minus RA. एठी मु P1 P2 लोड उठे लगी को रखी छी. आपन को क्वेश्चन रे वैल्यू दिया आइतो 40 न्यूटन की 60 न्यूटन एम्ति वैल्यू गुडा को दिया आइतो. ये स्पैन लेंथ गुडा को दिया आइतो. सो ये सब लेंथ गुडा को यूज करी आपण कैलकुलेशंस गुडा को करिवे. ओके, एठी याकू भी सिंपलीफाई करिले आउ थरे भल से सिंपलीफाई हो जिवो. देखंतो L एठु कॉमन नै जिवो ऊपर. तो L कॉमन नै गेले कोन रहिवो? P1 minus P2 बस P1/2 minus P2 एतकी रहिवो. ये रिएक्शन स्टार कित रहिवो? L जदी कॉमन नै जिवो ऊपर तो तळे L अछि कटि जिवो. तो रही जिवो कोन एतकी P1/2 minus P2. दिस विल बी योर RA. ठीक अछि, तो एबे देखंतो तो P1 माइनस ब्रैकेट रे लिखंतु P1/2 माइनस P2. ताको सिंपलीफाई करिवे तो ये RB रो वैल्यू केता आसी जीवो P1/2. ठीक अछि, प्लस P2. दिस विल बी योर RB सपोर्ट रिएक्शंस वैल्यू. एमिति आपण फाइंड आउट करिवे ये एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन. आपन को क्वेश्चन रे वैल्यू पूरा को दिया आइथिबो. ओके, तो बाय यूजिंग द वैल्यूज वी हैव टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन वैल्यू. ओके, तो देखन तो केते इजीली केते बढ़िया से जस्ट बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ये एनालिसिस टा कंप्लीट ही गेला. आमे कोन करिलु? किछि करिलु कि ना किछि करिलु, बस इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करिलु एंड वी हैव फाउंड और वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन. So this is your step number 2 of method of joint. This is your step number 2 of method of joint. Now, लेकिन नहीं जानते लिखी दूची step number 3. देखो तो external support reactions रो calculation complete here. ठीक है जी, you have found, you have calculated the external support reaction value. एबे हमको कौन दरकार? इंटरनल रिएक्शंस फाइंड आउट करियार अछि. इंटरनल रिएक्शंस मींस मेंबर फोर्सेस. इंटरनल रिएक्शंस मींस मेंबर फोर्सेस. तो स्टेप नंबर 3, फाइंड मेंबर फोर्सेस. ठीक अछि, तो मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करिया और आकु ही हमें कोन करिवा इंटरनल रिएक्शंस. इंटरनल रिएक्शंस. तो देखो मेंबर फोर्सेस और इंटरनल रिएक्शंस हमको फाइंड आउट करियार अछि. लेट मी टेल यू साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू दिस. हमको जणा ट्रस रो को भी मेंबर अछि, जेमते एठी तीनटा मेंबर अछि, एसी मेंबर, एबी मेंबर, तापरे बीसी मेंबर. ये मेंबर गुडा करे एक्सियल फोर्सेस थिबो. से एक्सियल फोर्सेस या तो कंप्रेशन थिबो या तो टेंशन थिबो. ठीक अछि, या तो कंप्रेशन थिबो या तो टेंशन थिबो. तो देखंतु आमे केमती शो करिवा. फॉर एग्जांपल देखंतु सब गोटे पॉइंट टेंसाइल फोर्सेस साइन कन्वेंशन ऊपर मु डिस्कशन करूची. साइन कन्वेंशन दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, जो साइन कन्वेंशन मु आपन को बतैबी से साइन कन्वेंशन ही पूरा ट्रस एनालिसिस रे बाय डिफॉल्ट फॉलो होची. टेंसाइल फोर्सेस, टेंशन is considered as positive, compression is considered as negative. What is it? Let's suppose को भी member अछि. For example we have a AC member. ये AC member अछि एमिति
तो ये मेंबर ऊपर मते बाय डिफॉल्ट मु एज्यूम करबी कि लेट्स सपोज इन दिस पर्टिकुलर मेंबर वी हैव टेंशन टाइप ऑफ फोर्स ओनली, वी हैव टेंशन टाइप ऑफ फोर्स ओनली। तो टेंशन फोर्स माने केमती शो करबी, हाउ आई विल शो। ये मेंबर ऊपर रू लेट्स सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर सी मेंबर, टेंशन फोर्सेस माने एमिति लेट्स सपोज दिस इज योर फोर्स एसी एफएसी, दिस इज योर फोर्स एसी माने मेंबर को टाणे भलिया आपन को शो करियार अछि like this, that is forces are outgoing from the member, okay, this is your tension positive। जदि compression मते AC member ऊपर compression शो करियार अछि, this is representation technique, how I will show compression, simply same AC member, if I am interested in showing compression AC member तो मु भीतर को आसला भलिया फोर्स टा देखि देबी, this is your FAC। ये टाइप जदि रिप्रेजेंटेशन करिवे दिस इज योर नेगेटिव, दैट इज टेंशन एंड कंप्रेशन ऑन मेंबर्स, ओके। एटा का ऊपर हमें देखैलो ऑन मेंबर्स। ठीक, जॉइंट ऊपर हमें केमती देखिवा टेंशन और कंप्रेशन। लेट्स सपोज वी हैव ए पर्टिकुलर जॉइंट, जेमति कि ये जॉइंट ए अछि हम पाखरे, ओके, वी हैव ए जॉइंट ए। तो जॉइंट ए रे मते मेंबर एसी रे टेंशन जदि देखेबार अछि तो देखंतु जॉइंट ए रो मु फ्री बॉडी डायग्राम बनौछि। तो दिस इज योर जॉइंट ए। तो एटी गुटे वर्टिकल रिएक्शंस एमती थिला ही जाकु मु आरे तो सीधा मु जेमती अछि सेमती शो करि देबी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन गुटे अछि एच ए, तो जेमिति अछि ताकु सेमिति ही शो करि देबी जो डायरेक्शन मु एज्यूम करिछि ऑलरेडी। नाउ जदि मते मेंबर एसी रे टेंशन देखेबार अछि आउ जॉइंट देखिबार अछि तो एट्रू गुटे अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मेंबर एसी बाहर पटे एरो काढिबे, दिस इज योर मु एज्यूम करबी फोर्स एसी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हेबो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंसाइल फोर्सेस एट जॉइंट ए इन मेंबर एसी। लेट्स सपोज ये गोटे जॉइंट रे कंप्रेशन फोर्स रो केमति रिप्रेजेंट करा जाउछि सीधा भी देखि दउछि। लेट्स सपोज इन मेंबर एबी कंप्रेसिव टाइप ऑफ फोर्स अछि, हमको अभी जाना नहीं, मु जस्ट एज्यूम करी आपन को बताउछि, हम तो सीधा कैलकुलेट करिवा, ओके, कि टेंशन फोर्स अछि ना कंप्रेशन फोर्स अछि। जस्ट आपन को साइन कन्वेंशन एंड रिप्रेजेंटेशन बुझौछि कि हम फोर्सेस को केमति रिप्रेजेंट करूछु, हाउ वी रिप्रेजेंट इट। लेट्स सपोज कि ये एबी मेंबर जो अछि आइ हम एज्यूम करूछु कि कंप्रेसिव टाइप ऑफ फोर्स अछि। तो से कंप्रेशन फोर्स को एमति देखि भीतर पटे एरो आछि F AB, this is a negative compression force. So at a joint all outgoing forces are basically tensile in nature, incoming forces are basically compressive in nature। ये पॉइंट गुडा को मन रखिथिबे एग्जाम रे पचारि पार, ओके। सो दिस इज नेगेटिव, दैट इज कंप्रेशन, एमती हमें रिप्रेजेंट करूछु, ओके। तो फर्स्ट ये साइन कन्वेंशन ये सब नोट करंतु, तापर मु बताउछि केमती सब कैलकुलेट हबो। देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड। देखा जाउछि तो हाँ विजिबिलिटी तो ठीक अछि, किछ प्रॉब्लम नहीं, लाइट टिके कम हे जाइछि भाई भौनी माने, डोंट वरी, बेसिक क्लासेस नेबी नहीं मु से पई ये घरे फ्री थिले भी क्लास नौनी, स्टूडियोस रे ही जाई कर क्लास नौजी। बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड सेटअप लगाइबा। आई एम गोइंग टू संबलपुर, 3 तारीख को मु संबलपुर जीवी, तो जदि के भाई भौनी माने संबलपुर अछंती भेट करि पारिबे मो सहित, मिसले बोलथियो मोर भी किछि काम अछि, मिसी करि कर दवा काम जाको। कंप्लीटेड, ओके, इरेज करूची, ओके, आई एम इरेजिंग इट, इरेज करूची पोर्शन टा, ओके। तो लेखंतु सब दिन सब से, ओके, साइन कन्वेंशन हे गला। तो मन रखिथिबे टेंशन को हमें पॉजिटिव कंसीडर करूछु एंड जत्ते बेले भी हमें एनालिसिस करिवा सो वी इन ऑल मेंबर सब मेंबर हमें टेंशन ही एज्यूम करिवा, ओके। सब मेंबर से हमें एज्यूम करिवा
कि एबी मेंबर हो कि एसी मेंबर हो तीनटा मेंबर अछि तो सब मेंबर रे टेंसाइल टाइप ऑफ फोर्सेस ही अछि आमे एज्यूम करि नबा तापर आमे कैलकुलेशंस करिवा जदी वैल्यू टा पॉजिटिव रे आसुची तो हमर assumptions हे गला करेक्ट माने से फोर्स सतरे टेंशन आका बट जदी वैल्यू टा नेगेटिव आसी गला तो आमे जो एज्यूम करिथिलु कोन कि मेंबर रे फोर्सेस टेंसाइल नेचर अछि से assumptions हे गला भूल माने मेंबर रे फोर्स टेंसाइल नेचर नाही कंप्रेशन नेचर अछि एमिति होउची आरो एनालिसिस सॉल्यूशंस गुडा ओके तो एबे देखो तो मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करिया तो केमति फाइंड आउट करिया बाय यूजिंग जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ओके फाइंड मेंबर फोर्सेस और इंटरनल रिएक्शंस बाय यूजिंग ओके एमति लेखु जेठी यूज जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस देखो तो ये जो जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करिवा एट ईच जॉइंट एठी केते जॉइंट अछि एबे तीनटा जॉइंट अछि जॉइंट ए जॉइंट सी जॉइंट बी ये तीनटा जॉइंट गुडा करे 2D ट्रस कथा मु कहउतली हेबे ओके स्टार्टिंग में हम लेखुथुलु तो हम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करिया तो आपा के दुईटा जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अछि एट ईच जॉइंट समेशन ऑफ f of y equal to 0 and at each joint summation of f of x equal to 0 ये दुईटा इक्वेशंस हमें लगे चलीबा आउ अननोन फोर्सेस गुडा को कैलकुलेट करी चलीबा तो एठी हमको एबे गोटे गोटे जॉइंट कंसीडर करिया पड़िबो एनालिसिस करिया पे लेट्स सपोज तीनटा जॉइंट अछि तो मु तीनटा जॉइंट कंसीडर करिबी ओके तीनटा जॉइंट अछि तो तीनटा जॉइंट मु कंसीडर करिबी देखंतु लेट्स सपोज कि फर्स्ट मु ये जॉइंट कुडा अच्छा आउ गोटे जिंस देखंतु एट ईच जॉइंट हमें दुईटा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ही अप्लाई करि परिबा so amane kono we can only find two values we can only find two unknowns by applying one set of equation at a joint yes or not so hence logic is method of joint रे हमको joint गुडा को एमिति चूज करियार अछि ओके एनालिसिस स्टार्ट करिया पय कि से joint रे दुईटा रु बेसी अननोन न रहू जदि दुईटा रु बेसी अननोन आसी गला then we can't solve अननोन आकर रही जीवो because on at a joint गोटे joint रे जदि इक्वेशंस अपन अप्लाई करिवे joint equilibrium equations तो at a joint you can only find two values ना तो हमको से टाइप ये joint गुडा को सिलेक्ट करिया पड़ियो ओके hence choose joint wisely such that there are only two unknowns at the joint ये पॉइंट गुटे सेकंड आई रही ओके ये स्टेप 3 भीतर ही लेको स्टार्ट दे दियो तो assume all unknown member forces of tensile nature ओके केमती एज्यूम करिवा ऑफ टेंसाइल नेचर हम एज्यूम करिवा लेट्स सपोज ये जो जॉइंट ए अछि एठु स्टार्ट करिवा ओके देखो देखि पारु संति जॉइंट ए एठु स्टार्ट करिवा आई एम स्टार्टिंग विथ जॉइंट ए तो जॉइंट ए रो मु फ्री बॉडी डायग्राम बने माने जॉइंट ए रे कोन अछि देखो दिस इज जॉइंट ए वर्टिकल रिएक्शन गुडे आसुथिला
RA हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एठू अछि HE तो मते कोन तो RA और HA रो वैल्यू अननोन अछि नो खाता रे देखो टिके पूर्व हम ये वैल्यूज गुडा को कैलकुलेट करी छु ऑलरेडी वी हैव कंप्यूटेड दिस वैल्यूज तो दीस आर नॉट अननोन्स ये वैल्यूज गुडा को हमको जाना ओके तो ये अननोन नहीं एठी अननोन कोन रहिबो मेंबर फोर्सेस गुडा को देखो एठी दुईटा मेंबर अछि गुडे AB मेंबर गुडे AC मेंबर एमती वाला AB मेंबर तो AB मेंबर भितरे जो फोर्स अछि AB मेंबर भितरे जो फोर्स अछि ताको हम कोन एज्यूम करियो एज्यूम ऑल अननोन मेंबर फोर्सेस एज टेंसाइल नेचर तो जॉइंट रूट बाहर पटे तो लेट्स सपोज दिस इज योर फोर्स इन AB member now AC member एमती अछि ताहिरे भी हमें जो फोर्स एज्यूम करियो टेंसाइल नेचर फोर्स इन AC member ये एंगल टा केते लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर एंगल एठी तो 45 डिग्री देई देछि और हमें थीटा कोई परिबा ओके लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर एंगल इज थीटा व्हिच इज इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम तो दिस इज योर जॉइंट फ्री बॉडी ओके जॉइंट ए रो फ्री बॉडी डायग्राम FBD आपण बोले हे गेला आपर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करियो समेशन ऑफ f of y equal to 0 and समेशन ऑफ f of x equal to 0 तो मु कोठी लिखिबी एठी लिमिट ए करी लिखुछि देखो देखो इक्वेशंस गुडा को लिखुछि देखो आपण ये मझे ये सब दिसो नोट करी चलंतु फॉर एग्जांपल जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अछि समेशन ऑफ f of y equal to 0 समेशन ऑफ f of y equal to 0 इडा जति हम अप्लाई करियो तो देखो ये जो FAC फोर्स अछि फोर्स रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स रो कांसेप्ट जो FAC फोर्स रो जदी मु वर्टिकल कंपोनेंट नेबी vertical direction में जदि मु component नेबी then what will be this particular component this component will be FAC sin theta और horizontal component कौन है जो FAC cos theta vertical component will be FAC sin theta directions of both the forces are same upward तो मु लिखिबी एठी RA plus FAC sin 45 डिग्री और sin थीटा इक्वल टू 0 एट्रो हमें कौन कैलकुलेट करियो देखो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट FAC वैल्यू तो FAC इक्वल टू माइनस RA बाय sin थीटा एमती कैलकुलेट हे जियो आ माने कोन हमें एज्यूम करितलो टेंसाइल नेचर ऑफ फोर्स बट कैलकुलेशन करिला पर आसिला कंप्रेसिव नेचर ऑफ फोर्स सो इन रियलिटी ये जो AC मेंबर अछि आइ रे कंप्रेसिव नेचर ऑफ फोर्स अछि ये दिन सब भी पचारनते आपको आपन को एग्जाम रे कि ये मेंबर टेंसाइल नेचर ऑफ फोर्स अछि ना कंप्रेशन नेचर ऑफ फोर्स अछि तो इन रियलिटी कंप्रेशन नेचर ऑफ फोर्स अछि ओके कंप्रेशन means our assumptions became wrong okay तो ये फोर्स रो वैल्यू केते माइनस RA बाय sin थीटा जति की भी थीटा वैल्यू थिबो सेटा पुट करी RA वैल्यू जति की भी कैलकुलेट हेगो राशि थिबो डिवाइड कर देबे से वैल्यू टा आसी जिवो मैग्नीट्यूड लाइक दिस गेटिंग द पॉइंट ओके तो दिस इज योर इक्वेशन 1 जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन f of y equal to 0 अप्लाई करि देले नोट करंतु आई एम इरेजिंग दिस पार्ट एबे देखंतु गोटे इक्वेशन अप्लाई कर देलु जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन सेकंड इक्वेशन अप्लाई करियो सेकंड इक्वेशन समेशन ऑफ f of x equal to 0 so by applying this particular equation f of x equal to 0 तो देखंतु लेट्स सपोज ये डायरेक्शन रे मु जिंस गुडा को पॉजिटिव कंसीडर करू दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन आई एम कंसीडरिंग एवरीथिंग पॉजिटिव लेट्स सपोज ठीक है तो समेशन ऑफ f of x equal to 0 means FAB plus FAC cos theta must be equal to HA
ये इक्वेशन आसीओ आई रे ऑलरेडी हमें एफ ए सी रो वैल्यू फाइंड आउट करि सारिछु बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन तो वैल्यू टा पुट कर दियंतु तो एफ ए बी देखो सेम एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर दियंतु माइनस होई तो आसी माइनस पुट कर दियंतु तो कोन है जो माइनस आर ए बाय sin थीटा into cos थीटा इक्वल टू एच ए तो एफ ए बी माइनस आर ए साइन बाय cos tan cos बाय sin तार उल्टा cot ओके तो छाड़न तू से सब न लिखि करी जो वैल्यूज थियो से अकॉर्डिंग आपण एनालिसिस तो करिवे तो मु लिखि दउची सीधा सीधा आंसर टा इन इक्वेशन फॉर्मेट ओनली एच ए प्लस आर ए into cos theta divided by sin theta so देखंतु जॉइंट ए रे दुईटा नोन थिला एफएबी मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करियार थिला एफएसी मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करियार थिला सो बाय अप्लाइंग द जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें दुईटा नोन फोर्सेस गुडा को फाइंड आउट करिने सो जॉइंट ए रो फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाई करी जॉइंट इक्विलिब्रियम फ्री बॉडी डायग्राम बनै को तो जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करिलो these member forces we have calculated once we have calculated these member forces एबे हमको जणा नेचर भी जेमते कि ये इक्वेशंस रु हमको जणा पडिला कि एफएबी पॉजिटिव अछि और एफएसी जो अछि दैट इज योर नेगेटिव ऑफ नेचर ये जिंस हमको जणा पडी गेलो एबे हमें मोर काम सरी गेला कुट रो ये जॉइंट ए रो काम सरी गेला मु दुईटा मेंबर फोर्सेस मते फाइंड आउट करिया थिला AC and AB सिडा मु कैलकुलेट करि देली आ गोटे मेंबर रहिला पुडा आपन रो ये BC मेंबर आइ रे केते फोर्स अछि सिडा आपन को एबे कैलकुलेट करियार अछि ओके आइ रे केते फोर्स अछि सिडा कैलकुलेट करियार अछि तो आपन बाके दुईटा ऑप्शन अछि या तो जॉइंट C रो इक्विलिब्रियम बनै नियंतु फ्री बॉडी डायग्राम नै नियंतु या तो जॉइंट B ओके को जॉइंट B आपन कंसीडर करिवे देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू इजीली that is member force in BC member let's suppose मु joint C टा नै को आपन को देखै दउची ओके तो joint A रे काम सरिला joint C ऊपर जीवा तो मु इरेज करबी आपन माने फर्स्ट एथि की लिखिनियो joint A work has been completed कंप्लीट क्लास भल लागुची लाइक कर देबे भाई भोनी माने लाइटिंग टिके कम अछि बट चढ़ियो दिस इज योर मेथड ऑफ जॉइंट ओके आ ऊपर क्वेश्चंस मु करबी आजी और माइक रो टिके प्रॉब्लम हे जेतला काली एबे भी अछि बोदे कोन की चेक करू एबे जस्ट नॉर्मल ब्लूटूथ यूज करू 30,000 माइक गॉन सर्विस रे जीवस और टाइम भी गेला अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स यूज कर लियो जॉइंट सी दिस इज अ जॉइंट सी ओके एफपीडी ऑफ जॉइंट सी देखो ये जो एसी मेंबर अछि आइ ऑलरेडी फोर्स आपण कैलकुलेट करि छथि आ आपण को एडा भी जाना कि ये जो फोर्स अछि एसी मेंबर दैट दिस पर्टिकुलर फोर्स इज ऑफ कंप्रेसिव नेचर तो एबे हमें ये सी रु बाहर को आसी एमती देखैवानी हमको नेचर जाना ना भीतर पटे देखेगा सिरा पे ये जॉइंट सी मुने ली ओके एमती देखेदा फोर्स इन एसी सीबी मेंबर ऑफ फोर्स अननोन अछि तो ताको हमें टेंशन ही कंसीडर करियो फोर्स इन सीबी ओके ताको हमें टेंशन ही कंसीडर करियो फोर्स इन सीबी मेंबर एबे देखो तो एठी आउ कोन अछि लोडिंग अछि P1 लोड एठी आउ कोन अछि ये टाइप P2 लोड अछि
तो दिस इज योर जॉइंट सी आर इक्विलिब्रियम आपण बनेले दिस आर द फोर्सेस एक्टिंग एट जॉइंट सी एबे एठी एंगल गुडा को किछि आपण डिसाइड कर नेले बोलथो लेट्स सपोज एठी मो गुडे सीधा लाइन ड्रा करिली लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर एंगल इज योर थीटा बाय 2 and this particular angle is your theta by 2 let's आपण को जणा थिबो ही ओके क्वेश्चन रे थिबो ही डेटा गुडा एठी अछि 90 डिग्री माने आकु मझी रे देखेबा तू 45 45 ही जो it will become 45 45 now I am going to apply the joint equilibrium conditions तो देखो first summation of f of y equal to 0 लेट्स सपोज ऊपर पटे ओके y एक्सिस x एक्सिस के एमती लेट्स सपोज ये जो y डायरेक्शन अछि आकु पॉजिटिव कंसीडर करिवे ये जो x डायरेक्शन अछि आकु नेगेटिव आकु पॉजिटिव कंसीडर करिवे ये पटे जो x रहिबो आकु नेगेटिव कंसीडर करिवे तळे जो y रहिबो आकु नेगेटिव कंसीडर करिवे एमती तो ऊपर पटे y अलोंग जदी हमें फोर्सेस कंसीडर करिया लेट्स सपोज दैट इज पॉजिटिव तो FAC cos theta by 2 FAC cos theta by 2 ऊपर पटे आयु पॉजिटिव FAC cos theta by 2 पॉजिटिव वैल्यू आइला एबे देखो तो एठी FAC रो वैल्यू हमें नेगेटिव जो वैल्यू हमरो नेगेटिव आस्थिला ना एमती आ माइनस RA sin थीटा ये माइनस होई तो एठी FAC लिखिया दरकार नै कोन पे लिखिया दरकार नै बिकॉज़ मु ऑलरेडी ये डायग्राम रे से फोर्स टा को एज ए कंप्रेशन ही शो करी छी तो से माइनस साइन एठी पुट करिया दरकार नै कोन पे बोले जदी एबे एठी माइनस पुट कर देबे तो से डायरेक्शन टा उल्टा हे जीवो आ से फोर्स टा टेंशन हे जीवो जस्ट मैग्नीट्यूड टा हमको पुट करिया रछि RA sin थीटा सॉरी माने RA डिवाइडेड बाय sin थीटा बुझा गेला कि ये जिंसोटा मन रखि देबे क्लियर मु जो पॉइंट गुडा एबे देखो एबे एठी हमें डायरेक्शंस ऑलरेडी कंप्रेसिव एज्यूम करी सासु ना आपको कंप्रेशन this is already compression direction हमें compression already नहीं सारी so हमें एबे just तार magnitude ये negative signs होता है कि value put करिवा नहीं solve करला बेटे कौन पे बोले I already taken the direction as compression clear getting the point तो FAC cos theta by 2 vertical component ऊपर पटे तापरे minus FCB cos theta by 2 तळ पटे आइबो FCB रो component FCB cos theta by 2 minus P1 must be equal to 0 this is one equation तो ये इक्वेशन रे देखो तो आपन को सब जिंस जणा FAC वैल्यू जणा थीटा by 2 वैल्यू जणा FCB वैल्यू जणा नै तो एठु सीधा ये गुटे इक्वेशन हमें लिखिबा तो FCB वैल्यू फाइंड आउट हिजो just by using this particular equation we can easily find out the FCB वैल्यू आउ सेकंड इक्वेशन लिखिबा भी दरकार पड़िबा ये गोटे इक्वेशन रो ये मेंबर फोर्स फाइंड आउट हिजो कंप्लीट हिजो जदी भी सेकंड इक्वेशन भी लिखिबा चाहौ छंते तू मु एठी लिखि कर देखै दउ छी बट तार किसी फायदा नै बिकॉज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ओनली यू हैव कैलकुलेटेड द मेंबर फोर्सेस ओके सेकंड इक्वेशन समेशन ऑफ f of x equal to 0 जदी लिखिबा तो देखो तो FAC sin theta by 2 plus P2 FAC sin theta by 2 plus P2 ये पटे जाउ छी तो ये पटे x को पॉजिटिव नहीं छी FAC sin theta by 2 plus P2 must be equal to आर भी कंपोनेंट ऊपर पटे ये पटे सेम डायरेक्शन देबो FCB sin theta by 2 plus FCB sin theta by 2 must be equal to 0 तो ये दुईटा इक्वेशंस को यूज करंतु आउ FCB रो वैल्यू फाइंड आउट करंतु यू विल गेट सेम वैल्यू सेम नेचर जदी से फोर्स का टेंशन अछि देन टेंशन ही पाइबे जदी से फोर्स कंप्रेशन अछि इन रियलिटी देन यू विल फाइंड कंप्रेशन ओनली सेम रिजल्ट ये दुईटा इक्वेशन दबो रिलेटेड टू FCB बिकॉज़ वन ओनली अननोन ये जगह रे गोटे ही अननोन अछि ना जॉइंट सी रे ओनली वन अननोन वी हैव तो गोटे को गोटे भी इक्वेशन अप्लाई करिवे से गोटे अननोन का फाइंड आउट ही जो सो वी हैव कैलकुलेटेड तो तीनटा मेंबर रे फोर्स दरकार थिला आमे कैलकुलेट करि नेलु सो दिस इज योर मेथड ऑफ जॉइंट दिस इज योर मेथड ऑफ जॉइंट माने फर्स्ट आमे चेक करिया कि डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट डिटरमिनेट हे गेला देन
एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करिया इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर ओवरऑल ट्रस ऊपर अप्लाई करी आफ्टर फाइंडिंग द एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस गोटे गोटे जॉइंट को मूव करी चलंतु आउ अननोन मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करी चलंतु जॉइंट रो फ्री बॉडी डायग्राम जते बडे बनेबे मेंबर रे फोर्स को एज ए टेंशन एज्यूम करंतु कैलकुलेशन परे जदि नेगेटिव आसी गला देन इट इज कंप्रेशन इन नेचर आमे जॉइंट एमती वाइजली सिलेक्ट करिया कि को भी जॉइंट आमे जो जोटा भी सिलेक्ट करू जो टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर मेथड सेठी दुईटा रु बेसी अननोन रहिबा कथा नै बिकॉज़ दुईटा रु बेसी अननोन थिले आपन को ये मेथड से अननोन गुडा को से जॉइंट रे कैलकुलेट करि देई परिबो तो हमको जॉइंट गुडा को एमती सिलेक्ट करि जीवा पड़ियो जाय रे जो जॉइंट रे दुई दुईटा अननोन अछि सबटु फर्स्ट से जॉइंट गुडा को एनालिसिस हमें करिना तापर ऑटोमेटिकली जेमती जेमती कैलकुलेशन सही चलथुओ तो मेंबर फोर्सेस जणा पड़थुओ तो नेक्स्ट जॉइंट को आपण मूव करि चलिए तो दिस इज योर ओवरऑल मेथड आपको यूज करी सब मेंबर जदि आपण को मेंबर फोर्सेस दरकार हो देन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस वी बेसिकली प्रिफर दिस पर्टिकुलर मेथड तो गोटे नोट मु लेखौ छी दिस मेथड is basically preferred when we need to calculate all member forces माने बहुत गुडा को मेंबर अछि ए ट्रस रे लेट्स सपोज गोटे को ट्रस अछि ताने बहुत गुडा को मेंबर अछि अब सब मेंबर रो फोर्स आपन को दरकार इन एवरी मेंबर यू हैव टू फाइंड फोर्सेस देन वी विल गो विथ मेथड ऑफ जॉइंट मेथड ऑफ सेक्शन जो अछि ता विषय मु बतेबी जदी आपन को बहुत बड़ा ट्रस दिया आइछि को गोटे सिंगल मेंबर और दुईटा मेंबर रे आपन को जस्ट फोर्स कैलकुलेट करिया पे को आइछि देन वी विल टेक ए सेक्शन एंड वी विल फाइंड आउट तो दिस इज वन मेथड तापर आमे मेथड ऑफ सेक्शन बुझियो सो केमती लागिला क्लास भल लागिला तो लाइक कर देबे नोट करि नियंतु सब जिंस सो क्लास भल लागिला तो लाइक कर देबे भाई भौनी माने डोंट मिस टू लाइक द क्लास एंड इफ यू वांट देखंतु कंप्लीट डेडिकेटेड प्रिपरेशंस चालू छी एठी ओके सो इन एवरी मैनर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग within your syllabus so if you are interested download the concept decoder android application google रे play store रे जिवे concept decoder okay concept decoder cd concept decoder concept decoder concept decoder android app download करी login करिवे login करिला परे सेठी हमर OSSC JEE पाई complete technical non technical classes available अछि सेठी join करिवे welcome start your dedicated preparations मजा लगियो भाई बहन माने कंपटीशन फाइट करियर अछि देन प्रिपेयर हेई कर गले भलो माइंड रे किछि थिबो आराम रे एग्जाम्स रे परफॉर्मेंस भी भलो जिवो ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ।